Hello everyone, can you see and hear me? All right, all right. Okay, so people can see as well as hear me. So good afternoon everyone and welcome to the 5th of July's the Hindu editorial analysis. I am Vaishnavi and this is presented to you by Unacademy. Let's get started. Hello, namaste Aditya. Hi, how are you? How are you, dear ma'am? I am good, Mohit. How are you? How you doing, Hivan? Pratik, hi. Hello. Motiur, hi. Christy, good afternoon. Preksha, hi. Truranga, namaste. Namaste. No lag? No lag? Lag? What lag? Is there a lag? I don't know about any lag. All right, let me just inform the group that I'm live, then we can get started. We can get rolling. I am live. All right, Ritu, hello, Vanya asked me it's lag but deleted the message. Okay, okay. So welcome, Sanjana, welcome, Christy. Let's commence. Apurva, hello. Hi, Karthik. All right, so it's सब बढ़िया बा सब बढ़िया बा सब बढ़िया बा अपूर्वा तोरा साथ सब ठीक बानू अपूर्वा Hello, Ria. Hello. All right. So let's get started. I think we can get started with today's editorial analysis. Good afternoon. Uh-oh. Hmm. All right. So this is my Telegram channel, Unacademy underscore Vaishnavi underscore CLAT. अगर अभी तक आपने नहीं subscribe किया है, it is high time that you do because RC of the day आज होने वाला है something that is highly difficult and something that will help you throughout your CLAT preparation. So and especially help you in reading comprehension, RC section and critical reasoning section. So please make sure that you subscribe to the channel so that we can sit and discuss the RCs that I give you today. Every day, okay, and a lot is happening on the channel, so please make sure कि मेरे class के सारे doings when is it happening in what platform is it happening, all that information you get to know on my Telegram channel. So please, oh my god, please do subscribe to my channel. This hair that is troubling me, I don't know where it is now, but it is troubling me. Okay,
All right, moving on to the another important thing about this session is कि अगर आपको इन क्लास के नोट्स चाहिए तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या ब्लू स्ट्रिप में जो आपको लिंक मिलेगा वो भी आप उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. उससे आपको मिल जाएगा इस क्लास के सारे नोट्स, द एवरीथिंग दैट आई डिस्कस इन दिस क्लास यू विल गेट इट via this QR code. Okay. The Wheel of Free English is a daily session. हर दिन 6 बजे होता है और ये फ्री है सबके लिए फ्री है. Anyone can come and join. Now, but it happens on the platform, Unacademy platform पे होता है स्पेशल सेशन 6 बजे. अगर आप ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको सारे स्पेशल सेशन मिल जाएंगे मेरे, which is all about the 360 degree English analysis. आपको इंग्लिश के बारे में जितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चीज की जरूरत है, जैसे ग्रामर, vocabulary, then reading comprehension, all that is discussed in the span of a week. Okay, 6 days के span में हम 6 बजे 6 टॉपिक लेके डिस्कस करते हैं. All right, so can we get started, ma'am? What do we do in this session? I am new student. CLAT Nagul. What you are supposed to do कि जैसे ही words आते हैं, आपको जैसे ही समझ में आ जाते हैं, तो आप अपने मन से कुछ एक sentence बनाओ which has those words. Okay, जो words मैं यहाँ पर use कर रही हूँ, वो words होने चाहिए आपके उस sentence में. So you can make one sentence comprising of 2 words or 3 words, or you can just make one sentence with 1 word. Okay, do not. First of all, I need a promise from everyone's side that you will not make more than one sentence. Okay, I need a promise, everyone. Whatever promise you want to give, God promise, mother promise, whatever promise, only one sentence. Do we have an agreement? I was JE aspirant. Recently, I switched in CLAT. What are the things in English I have to learn for reading comprehension? Currently, I'm doing word palm made easy and newspaper only. Ritik, apart from that, you have to follow my sessions, okay? आप ये बुक खरीद लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए. अजय सिंह का है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसे सॉल्व कीजिए एंड मेक श्योर यू आर लुकिंग एट द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आफ्टर सॉल्विंग द पैसेज. ओके, so that will prepare you well, Ritik, as well as you have to watch these sessions mandatory because it tells you कि आपको passage को कैसे approach करना है. Reading, you have to make sure that you are doing for 90 minutes. जिसमें 60 minutes you're giving to newspaper reading and 30 minutes you're giving to leisure reading. 30 minutes of leisure reading will comprise of fiction, non-fiction, whatever book you want to pick up, you can pick up that book, okay? So all these will help, and very nice. I am so glad, Ritik, that you started with the best book that you can start with. Word Palm Made Easy and newspaper are the two holy grails of English language or CLAT preparation. Very nice. So you are on the right track. The right track, baby. I was born this way. Born this way. Okay. All right. So, Shivan, I have your agreement. I have Alpesh's agreement. I have Sanjana's, Aditya. Only one. Okay. Madara, I have Truranga. NLU Kasam. Okay. मैडम पैसेज में टोन समझ में नहीं आती है कि वो sarcastic. Okay, this reminds me, Tom, I will get back to that question, but before, okay, Clat Nagul also promises and John Doe also promises. Okay, great, fantastic. Now remember something else कि कल जो हमने पैसेज किया था उसका टोन एक रह गया था. I was not concentrating, लेकिन cynical definitely था. Okay, cynical था कल का पैसेज भी. Okay, because the author did not show complete trust in the methods that they were using, right? So cynical definitely था. Okay, so the author was cynical about it. Okay, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ प्लान कर रहे हैं. Okay, that is why they are switching teams. That is why they are defectors of one party and joining the other party. So cynical. Okay, mal इंटेंशंस, उनके मैलिफाइड इंटेंशंस थे, इसीलिए वो स्विच कर रहे थे एक पार्टी से दूसरे पार्टी. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिनिकल एज वेल. ओके, ओके, सो एवरीवन प्रॉमिसेस. ऑल राइट. मिसैंथ्रोपिक, Madara. Okay. Not really. Misanthropic is someone who hates all humankind and says there's nothing good that will ever come out of humans. They are just going to destroy the Mother Earth and make
and ends this world with their nonsense. Okay, that's what misanthropes think. Okay, they do not believe in charity or good work towards human beings. Okay, so thwarting. Thwarting is a verb. ing यहाँ पर use हो रहा है, तो thwart is the thwart is the verb, is the actual verb form. यहाँ पर passage में ing form use हो रहा है. So thwarting is to stop something from happening or someone from doing something. Okay, so किसी को रोकना कुछ करने से, okay, या कोई चीज होने से रोकना. ओके, कोई चीज होने से रोकना या किसी को कुछ करने से रोकना. ओके, दैट इज थ्वॉटिंग. ओके, सो थ्वॉटिंग इज बेसिकली किसी को कुछ करने से रोकना या कुछ होने से आप रोक रहे हो किसी चीज को. दैट इज टू थ्वॉट. ओके, थ्वॉट. And this word we have seen before. I remember only once, but we have seen this word before. Okay, next is spate. Spate is the noun form. Okay, noun form है spate. A large number of similar things coming in quick succession is spate. ये भी हमने पहले किया है. Spate क्या होता है? कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होते रहती हैं. That is in quick successions. मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. Okay, in quick successions, बिना रुकावट के कोई चीज होते रहती, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो जा रही हैं. दैट इज spate. ओके, now next is disconcerting. ये भी हमने word पहले किया है. It is an adjective. It is causing one to feel unsettled. Okay, disconcerting is something, बहुत बार किया हमने. Okay, disconcerting मतलब कोई चीज जो पचती नहीं है आपको. Okay, हजम नहीं होती है आपको. You feel very unsettled about it. कि ये कैसे कर दिया इसने, ये क्यों किया उसने. Okay, and that is disconcerting. Next word is countenance. Okay, countenance is support or approval. Okay, countenance का मतलब क्या होता है? Support करना या approval देना. Okay, किसी चीज को countenance करना is to support them या उसको हाँ बोलना. Okay, हाँ बोलना या तो support provide करना. Okay, approve कर देना या तो support provide कर देना is countenance. Next is dissent. Dissent is also something that we have seen a number of times. Okay, dissent, and it has two spelling, dissent and discent. Okay, dissent दो word होते हैं. ये वाला जो डिसेंट है इसका मतलब क्या होता है? होल्ड और एक्सप्रेस ओपिनियंस दैट आर एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड. ओके, डिसेंट मतलब जो बाकी लोग जिससे अग्री कर रहे हो, आप नहीं अग्री कर रहे हो उससे. ओके, आप क्या कह रहे हो कि नहीं ये सही नहीं है, चाहे दुनिया बोल दे ये सही है, ऑफिशियली इट इज कंसिडर्ड राइट, बट यू डू नॉट थिंक दैट इट इज राइट. आपका ओपिनियन कह रहा है कि ये सही नहीं है. ओके, so no matter even if it is a law or a policy or officially held a belief. Okay, officially held belief या लेकिन आप उससे अग्री नहीं करते. ओके, सो दैट इज टू डिसेंट समथिंग. ओके, यू डू नॉट प्रोवाइड योर अप्रूवल टू समथिंग. ओके, अपना अप्रूवल आप नहीं देते हो किसी चीज को. ओके, सो असेंट विल बी प्रोवाइडिंग अप्रूवल. डिसेंट इसका ऑपोजिट क्या होता है? असेंट. ओके, all right, so again this s वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, असेंट और डिसेंट, दो असेंट एंड डिसेंट होते हैं. एक तो चढ़ना उतरना को कहते हैं माउंटेन्स, व्हेन यू असेंड माउंटेन एंड यू डिसेंड माउंटेन, दैट इज वन. एंड डिसेंट इज द वर्ब फॉर्म, असेंट इज द वर्ब फॉर्म. इसका ऑपोजिट है ये, जिसका मतलब होता है कि आप कॉमनली हेल्ड बिलीफ से अलग जा रहे हो, आपकी राय अलग है जो मासेस की राय है उससे. ओके, all right. um क्रिस्टी, डिस्कनेक्टिंग आपने यूज किया. डिस्कनेक्टिंग, इट इज डिस्कंसर्टिंग. डिस्कंसर्टिंग. ओके, टेम्पर. नेक्स्ट इज टेम्पर. नाउ दिस टेम्पर इज समथिंग एल्स. ओके, जनरली टेम्पर क्या होता है? किसी का एंगर या किसी का मूड स्विंग जो इसका बहुत ज्यादा होता है. सो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टेम्पर. शी हैज गॉट अ टेम्पर. ओके, शी हैज गॉट अ स्लाइट टेम्पर. ओके, दैट मीन्स ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंट टेम्पर. दिस टेम्पर मीन्स टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और लेस एक्सट्रीम. ओके, सो कोई भी चीज को आप उसकी एक्सट्रीमिटी घटाते हो या आप उसको कम स्ट्रॉन्ग बनाते हो. ओके, दैट इज टू टेम्पर समथिंग. ओके, टू टोन डाउन समथिंग. ओके, टेम्पर इज टू टोन डाउन ओवर हियर. ये जो नाउन फॉर्म है. ओके, सॉरी, ये जो वर्ब फॉर्म है. हल्का सुरूर है.
Wrong song. Okay. Temper, to make something less strong, extreme, etc. Okay, so that is to tone down. Okay, next word is zeal. Okay, zeal is, I think this is the noun form itself, not the verb form. Okay, zeal क्या है? ओ, ये वर्ब फॉर्म है, लेकिन इसका जो नाउन फॉर्म होता है, राइट, जो नाउन फॉर्म होता है उसका मतलब होता है कि किसी को गुस्सा जल्दी आता है, उसको कहते हैं कि दैट पर्सन हैज गॉट टेम्पर. ओके, सो नाउन फॉर्म का मतलब होता है गुस्सा जल्दी आना. ओके, yes, mitigate, you can use ameliorate, alpage, yes, absolutely, ठीक है. That can also be used. Okay, synonymous हो जाएंगे, synonymous हो जाएंगे, ठीक है. Okay, zeal is a word that you must be knowing because it is a high frequency word, right? Zeal का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा energy या enthusiasm in pursuit of a cause or an objective. आप बहुत enthusiastic है, आपके पास zeal है to clear, to get AIR1. अगर आपके पास zeal है, okay, that means आपके पास enthusiasm है, आपके पास बहुत energy है कि मुझे AIR1 चाहिए. Okay, so that is high energy, high enthusiasm. Okay, so zeal is something that is very much required when you are pursuing something. Okay, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा अगर enthusiasm दिखाते हैं या बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाते हैं, तो that is called the zeal of something. Okay, this is something that we have not discussed before. Deem is the verb form. Deemed fit, हमेशा हम generally कैसे use करते हैं? This thing is deemed unfit. Okay, ऐसे हम generally use करते हैं deemed fit या deemed unfit. Okay, so regard or consider in a specified way. Okay, so deemed unfit मतलब इसको regard किया गया है unfit. Okay, इसको regard किया गया है something. Okay, so deem is just to regard. Okay, so deemed ed form भी use हो सकता है, deeming ing form भी use हो सकता है. Okay, so this is verb. That's why we can use the ed form as well as the ing form, deeming and deems. Okay, स्पाउस करना, किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना. अगर हम जेंडर, और एक मीनिंग होता है स्पाउस का मतलब मैरी करना. ओके, मैरी समवन इज स्पाउस समवन. ओके, सो यू स्पाउस दैट वुमन. ओके, Truranga espoused the woman he hated the most. That would be classic. ओके, सो espouse करना वो भी मतलब होता है. यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई चीज को अडॉप्ट कर लेना या सपोर्ट करना, किसी चीज को, कोई भी बिलीफ, कोई भी वे ऑफ लाइफ है, उसको आप अडॉप्ट कर ले रहे हो. ठीक है, तो लेट्स से आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज द वे, सो आप क्या करते हो? स्पिरिचुअलिटी को स्पाउस कर लेते हो. ओके, दैट मीन्स यू अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी, यू सपोर्ट स्पिरिचुअलिटी इन दैट केस. ओके, तो दैट इज a spouse. My relatives' thoughts for me are always too disconcerting. Very nice, Soumya. Good job. Moving on. Okay. So, espouse is a new word. Next is intervener. Okay, intervener, again you can use it or in the form of or er as well. Intervene जो करता है उसको intervener कहते हैं. ठीक है, a person who intervenes, especially in a lawsuit. अगर कोई बीच में आता है, especially in a lawsuit, अगर intervener is a person, okay, it will always be a person. Okay, the one who intervenes is an intervener. Okay, मतलब जो बीच में आता है, जो किसी चीज में as a third party, someone obstruct something या hindrance डालता है या बाधा डालता है या किसी चीज में अपने पॉइंट को बीच में किसी के पॉइंट को बीच में रोकता है. ओके, अड़चन डालता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड an intervener. Okay, so person who intervenes is called an intervener. ठीक है, okay. Now rebuff is a word जो हमने पहले भी देखा है. Okay, this is a new word, but rebuff हमने पहले भी देखा. Rebuff can be a verb as well as a noun, लेकिन यहाँ पर as a verb use हुआ है. verb as a verb use हुआ है, जिसका मतलब होता है कोई चीज को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को या किसी इंसान को in an abrupt or ungracious manner. बहुत बदतमीजी से किसी को, बहुत रूडली
किसी को रोक देना, किसी को बोलने से मना कर देना। आप कोई बोल रहा है तो आप उसमें बीच में क्या कर रहे हो, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली आप बिना पोलाइटली बोले कि एक्सक्यूज मी या कुछ ऐसा, ए तू चुप हो जा, ओके, दैट इज रिबफ, ओके। तू चुप कर, ओके, तुझे तो ऐसे भी कुछ नहीं पता है, ऐसे करके अगर कोई चीज को रिजेक्ट करना इज टू रिबफ समथिंग, ओके। तुझे कुछ नहीं पता, ओके, तू चुप हो जा, ओके, दैट इज टू रिबफ, ओके। सो रिबफ इज रिजेक्ट समवन और समथिंग इन एन अब्रप्ट, ओके, अब्रप्ट मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक से, ओके, अचानक से, और अनग्रेशियस मतलब मैनर्स के साथ आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो उसको, बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर रहे हो, ओके, दैट इज टू रिबफ, ओके। सो द वर्ड्स दैट वी सॉ आर thwarting, spate, disconcerting, countenance, dissent, temper, zeal, deem, espouse, in intervener, and rebuff. All right. So let's look at the sentences. Okay. Clap Nagoon, don't spam. Worcestershire. Worcestershire is um, it's a country. It's a place in England, I believe. Okay. All right. Shashank, good afternoon. Humanity's doom. Okay, humanities. Yes. Alpesh, absolutely. That is a misanthrope. Righteousness. What do you want me to tell you the meaning of righteousness? Yeah, Navneet, what do you want to know about righteousness? Is it a word for misanthrope? ये कहाँ से लोग वॉचेस्टर ये इतने सारे वॉचेस्टर शायर क्लैट नगुल I hope you got it, okay? Uh, all right, let's start with Christy's statement. My relatives thwarted me to do CLAT, but my parents always spurred me to do whatever I want, except my Goa trip. Christy, yes, yes, good sentence, Christy. Good start. Anmesh, we need to thwart this project as it is compromising human safety. Very nice, as it is compromising human safety. Very nice. All right, then we have God knew that I had never wished to thwart her in anything. Still, she's arguing with me. Someone, please tell me what is my mistake. Truranga, I'm sure you know what your mistake is, but you still want to pretend that you don't understand. That's the thing with men. They like to pretend that they don't understand what is going on. When the women are screaming at the top of their voice that what is wrong, still they will pretend, हुआ क्या इसको? इसको क्या हो गया अचानक से? Okay, Aditya, I try to thwart myself from scrolling reels. Very nice. Good job. Good job. Spate of current affairs is making me disconcerting. Very nice, Anmesh. Very nice. Good job. Christy, since March, I had give exam which is stately happening. Stately happening. Uh, my exams has been a spate. Okay, my exams have been a spate. Okay, all right. Good job, Christy. Aditya, I countenanced my friend to clear the exam. Very nice, Aditya. Good job. Soumya, my sister always thwarting me, my sister is always thwarting me from wearing her clothes. Very nice, Soumya, of course. Truranga, after the storm, all the rivers were in spate. Very nice. And I lost my dresses that I was drying up on the terrace. Okay, it would be better, Triranga, if you use clothes, because dresses are the ones that one pieces that women wear, right? So
What were you doing with so many dresses? Triranga, I don't know what is up with me today, but I really want to pull your legs for some reason. Okay. Aditya, I express dissent against the people who hate stray dogs. Very nice, Aditya. You feel very strongly for stray dogs, I've seen, and Priyanka Chopra, of course, Aditya. Good job. Even I taught myself to not enter into my friend's house. Friend apostrophe yes hoga yahan par Hivan, friend's house. Because, please write the complete thing. Because cause is not a conjunction, okay? There's a difference between, because Americans have started shortening words for some reason because they think it is, and lot of abbreviations these days. So please do not do this in your English class at least, because it is because, okay, not cause. Okay, cause is something that you say when you're speaking in informal tone. Okay, so because, okay, because, okay. Good job, because I can sense some demonic presence in it. Ooh, Hivar, I am interested. Nice. Okay, tell me more. Christy, no one countenance my Goa trip in my family. No one uh, countenanced or provided countenance. Okay, provided countenance to my Goa trip in my family. Christy, poor you. I feel very sorry for you. But you will go after this exam. You will definitely go to Goa. Preksha, I tried hona chahiye. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Din, 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 din. Okay. I try to thwart myself from thinking about him, but a spate his memories ran through my head. A spate of his memories, okay? A spate of his memories ran through my head, okay? A spate of his memories ran through my head. Good job, Preksha. Good job. I tried to thwart myself. Very nice. So it should be tried. Okay, Christy, I'm always disconcerting others apostrophe S hoga, others secret and make trouble for them. Okay, I knew you were trouble when you walked in. Trouble, trouble. Okay, Soumya, exams are coming in a spate way. Very nice, Soumya, simple and sweet. Christy, my dissent thinking not liked by my grandma. My dissent thoughts were not encouraged by my grandma. Good job, Christy. Good job. Aditya, I have seen spate of South Indian dishes in Brahmin Cafe, Bengaluru. Very nice, Aditya. Awesome. It is awesome, let me tell you. Anyway, Turanga, her face is stylized with oval almond eyes and red lips is disconcerting. Overall, she looks lullant up. Okay, her stylized with oval almond eyes with red lips is disconcerting. Overall, looks lullant up. Very nice, Riranga. Good job. Let him temper the task with his zeal. Very nice, Anmesh. Good job. Good afternoon, Kinkini. Good afternoon. Hewan, we got an information report that the bombings was the latest in spate of terrorist attack which took place in Iran. Very nice, Hewan. Good job, Aditya. Priyanka Chopra has zeal and energies to motivate the young generation. Has a zeal to motivate the young generation. Very nice, Aditya. Her father won't countenance her marrying a foreigner. Still, she is dreaming to have a Korean boyfriend like BTS or something. What a bad dream, Raga, but okay, good for her. Christy, I have zeal to clear CLAT, but my overthinking makes me dismal and temper my confidence. Very nice, Christy. Good job, Soumya. My relatives thought for me are
always too disconcerting. Very nice, Sanjana. He always asks for my countenance whenever he's leaving me because he wants me to thwart him to not thwart me for no to go. Thwart him, thwart him for not going. Okay, thwart him for to not go. Thwart him to not go. Okay, Vanya, good job by the way, Sanjana. Vanya, ma'am, where can I find this class notes in an academy app? I am plus member. Vanya, you just ये जो blue strip में comments में आपको blue strip दिख रहा है ना उसमें लिखा हुआ है free download notes. You click on that link, it will take you to all the notes. Okay. Christy, I espouse my friend after his breakup and thwarted him to pick up my call. No, not to, and thwarted him to not pick up her call. Okay. Very nice. CLAT Nagula studied with zeal for CLAT exam, determined to crack it and fulfill my dreams of becoming a lawyer. Very nice. There are many ways of expressing dissent. Very nice, Truranga. I espouse our Indian football team and their zeal towards the game shows that FIFA World Cup is not so far now. It is still very far, Anmesh, but yes, optimistic. Good job. Oh, Truranga. Yes, it calls for a celebration, but we are still, it is a long way to go. Very nice. Soumya, whenever I feel low, my bestie's countenances me in every situation. Good job. She broke the plates in a fit of temper. So, behen chal paisa de iske. Good job, Truranga. When I discussed with my parents about my career, my foes intervene. Very nice, Christy. Very nice foes, enemies. Wow. I studied with zeal for CLAT exam, determined to crack and fulfill my dreams of becoming a lawyer. Very nice, CLAT Nagul. He rebuffed his wife's apostrophe S, wife's opinion, but he felt embarrassed as she cracked UPSC the very next day. Very nice, Anmesh. Preksha, I tried to thwart myself from thinking about him, but spate of his memories ran through my head. Very nice, Preksha. The spate of recent terrorist attacks has been disconcerting and has thwarted the hopes of many for a more peaceful world. Very nice, awesome. I rebuff on my ex post whenever he posts something about loyalty. Good job, Sanjana. Christy, my cousin rebuffed my GK question when I asked in front of her mother. Very nice, very nice. You are putting your cousin in an awkward position. No wonder she replied like that. Aditya, yesterday in a debate, I was placing my points of view on the recent train tragedy, but some of my own friends rebuffed my ideas, which was disconcerting for me. Okay, which disconcerted me. Very nice, Aditya. Good job. Soumya, I have zeal to bring good marks in my mocks to pave the way to clear CLAT. Okay. Triranga, she had a true zeal for journalism, and I had a true zeal for LLB. Very nice, Triranga. Oh, this is the story that you're going to tell to your grandchildren. Oh, okay. Himan, when I was in LA, there was this cop showing racial behavior and abusing me. But the twist is, I am the captain for the state of California. I'm the captain of the state of California, and he got rebuffed badly and got suspended. Very nice one, good story. But what happened to the ghost? I want to know more about the ghost. And Mesh, it's really funny to see the Pakistan descent, to see that Pakistan descent from their weakening economy. Very nice, Anmesh, very nice. Where is Alpesh today, by the way? Alpesh कहाँ चला गया? Alpesh के sentences क्यों नहीं दिख रहे मुझे? Where is Alpesh? Nikhil Sharma. She buffed my proposal 10th time, but it's not last. Keep trying until you achieve your goal. Wow, Nikhil, I like your determination, but please don't become a creep, okay? Very nice. So you can just say 10th time, but I will keep trying. But they say that you should keep trying until you achieve your goal, okay? Nikhil, good job.
तो अल्पी सेंटेंसेस कहाँ है? ओके ओके our suggestion was with sharp rebuff. Very nice. Was something with sharp. Ma'am sentences बनाया है बस. Sentence बनाया बस. I know Nikhil, and I'm also just saying something. Okay, I'm just saying. Okay. Next set of words is speculative. Okay, speculative. Speculative का मतलब क्या होता है? Engaged in expressing or based on conjecture rather than knowledge. Okay, so speculative किस चीज पे based होता है? Conjecture पे based होता है. मतलब एक कई सुनी बातों पे बेस्ड होता है देन एक्चुअल नॉलेज. ओके, तो स्पेक्यूलेटिव ऐसी चीजें होती हैं जो हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो या थ्योरीज पे बेस्ड होती है, ना कि एक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड होती है. ओके, स्पेक्यूलेटिव. ओके, दैट इज स्पेक्यूलेटिव एंड इट इज एन एडजेक्टिव. Incitement. Incitement is a noun, the action of provoking unlawful behavior or urging someone to behave unlawfully is incitement. Okay, किसी को incite करना is किसी को provoke करना, ठीक है, किसी को भड़काना in an unlawful way. ठीक है, किसी को incite करना कि तुम उसका murder कर दो तो तुम्हें तो जेल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी family को हम पूरा provide करेंगे सारी facilities and they will never basically they will never face any kind of problem. So that is incitement. Okay, so the action of provoking unlawful behavior or urging someone to behave unlawfully. Okay, incitement. All right. Then we have propaganda. Propaganda is also something that we have seen before. Information, especially of a biased or misleading nature, used to promote a political cause or point of view. Propaganda क्या होता है? ऐसे information को कहते हैं जो biased होता है, ठीक है, जिसको दोनों साइड से नहीं देखा गया होता है, एक ही साइड देखा गया होता है किसी चीज का, और वो किस लिए दिखाया जाता है वो साइड, ताकि गुमराह कर सके लोगों को. ओके, उसका गुमराह करने का नेचर होता है. एंड पॉलिटिकल कॉज के लिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट किया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ, तुम्हारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तुम्हारे ही सोसाइटी को, तुम्हारे ही सेक्शन को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, बाकी सारे सेक्शन को मिल रहा है. सो दिस इज प्रोपेगेंडा. ओके, आप प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको बस आपके साथ भेदभाव हो रहा है. ओके, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ताकि वो इंसान आपके पॉलिटिकल पार्टी के लिए एकदम लड़ने को मरने को तैयार हो जाए. दैट इज प्रोपेगेंडा. ओके, सो प्रोपेगेंडा ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाना जो बायस्ड इंफॉर्मेशन होती है, एक साइडेड, एक बस पहलू दिखाया जाता है ताकि लोगों को गुमराह कर सके. एंड स्पेशली इंटेंशन क्या होता है? पॉलिटिकल कॉज के लिए होता है, ठीक है, प्रमोट करने के लिए पॉलिटिकल कॉज की. यही यही पार्टी जो है ये सही है और यही सही काम करते हैं, दूसरी पार्टी जो है वो हमारे साथ बहुत भेदभाव कर रही है. ओके, दैट इज अ प्रोपेगेंडा. इंस्ट्रूमेंटैलिटी. ओके, इंस्ट्रूमेंटैलिटी किसी चीज का क्या होता है? दिस इज अ न्यू वर्ड. इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब होता है द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विंग एज एन इंस्ट्रूमेंट और मीन्स टू एन एंड. ओके, एजेंसी, कोई भी चीज की एजेंसी जो होती है. ओके, एजेंसी, जो चीज क्या करने के लिए किसी चीज को सर्व करती है. ओके, एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए एज ए कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, या कोई चीज जो जरूरत होती है किसी एंड तक पहुंचने के लिए, मीन्स टू एन एंड. ओके, सो इट इज अ वे, एक जरिया बन जाता है किसी एंड रिजल्ट को ऑब्टेन करने का. ओके, दैट इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी. ओके, द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विंग एज एन इंस्ट्रूमेंट और मीन्स टू एन एंड. क्या सही समझाया मैंने ये वाला? ओके, नेक्स्ट इज कर्व विच इज अ नाउन. ओके, ये वर्ब फॉर्म हम नहीं देख रहे, कर्व का हम वर्ब फॉर्म नहीं देख रहे, हम नाउन फॉर्म देख रहे हैं. लिमिट ऑन समथिंग दैट इज नॉट वांटेड. ओके, तो कर्व करना मतलब क्या होता है? कोई चीज को लिमिट कर देना होता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है. ओके, उसको आप क्या कर देते हो? उसको कुछ उसकी एक लिमिटेशन डाल देते हो कि मैं पार्टी बस वीकेंड को ही करूंगा, या पार्टी बस मैं संडे को 1 घंटे ही कर दूंगा. ओके, सो यू हैव कर्व्ड योर टाइम. ओके, यू हैव कर्व्ड योर टाइम फॉर पार्टीज. ओके, okay, so curb is noun form, a limit or on something that is not wanted. Okay, that is something that is not wanted, तो आप उस पे लिमिट लगा देते हो, ठीक है. फोन में 5 मिनट ही यूज करूंगा पूरे दिन में, that is something. Okay, but obviously won't work for you because everything is online.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैं बस 5 मिनट ही देखूंगा या देखूंगी दिन भर में, ओके, दैट इज अ पुटिंग अ कर्ब ऑन समथिंग, ओके, सो कर्ब ऑन समथिंग. So I put a curb on my social media interaction or engagement. Okay, I put a curb on my social media engagement or interaction. Okay. Next is, so this is also, let's take it a new word, identifiable. Identify करने का adjective form है. Able जब भी लग जाता है, it is always adjective form. Okay. So recognizable, identifiable, identifiable. Then identifiable. Then you have comfortable, you have demandable, डिस्टिंग्विशेबल. ओके, यहाँ पर डिस्टिंग्विशेबल भी है. तो एबल टू रिकग्नाइज, कोई भी चीज को आप रिकग्नाइज कर सकते हो. ओके, सो दैट इज समथिंग जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. विल, इज दिस पर्सन आइडेंटिफाइबल इन अ क्राउड? ओके, इज दिस पर्सन, विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन इन अ क्राउड, और इज दिस पर्सन आइडेंटिफाइबल इन अ क्राउड? ओके, सो क्या आप इसको इस पर्सन को अलग कर सकते हो क्राउड में, आप इनको स्पॉट कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो. फाइनली बर्थ. बर्थ क्या होता है? एक बेड होता है बोट में, ट्रेन में, लेकिन यहाँ पर इसका सिचुएशनली यूज हुआ है. ओके, बर्थ, BERTH and BIRTH are two different things. I am sure you all know, but I'm just letting you know again कि BERTH, birth, ये क्या होता है? कोई भी सीट जो मिलता है आपको ट्रेन में, बोट में, शिप में, तो उसको आप क्या कहते हो? बर्थ. Okay. All right. So let's just quickly look at the rest of the sentences. No, not many. John Cena, Alpesh. Whenever my friend asks me to go on a date, I rebuff his proposal and tell him, बंदर के साथ कौन डेट पर जाएगा? Okay, and he still asks you that, Vaishnavi. Okay. Okay, sentence. Good job. Anmesh, all theories regarding formation of universe are speculative. Very nice, Anmesh. Good job. Rajat, ma'am, could you suggest things I should focus on as I'm starting my preparation? What should I complete first? Rajat, बहुत aggressive. 18 घंटे पढ़ो आप दिन भर में, तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा. रजत, बहुत लेट आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो अग्रेसिवली सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, बैकलॉग्स क्लियर करो. अगर आप प्लस सब्सक्राइबर या आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो, तो पहले के सारे क्लासेस जितने भी चीजें हैं वो सब अभी तक आपको कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए था आपका. और अब आपको क्या शुरू करना है? यू हैव टू स्टार्ट विथ गिविंग मॉक्स एंड पुटिंग योर सेल्फ, ग्रिलिंग योर सेल्फ थ्रू टेस्ट एंड मोर टेस्ट. ओके, सो आपको 18 घंटे पढ़ने होंगे रजत, क्योंकि पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो अपने, उसके बाद आप बैठो. जो जनरल रूटीन है वो भी फॉलो करना है, राइट? आपको हर दिन ये जो मैंने अभी बताया, 90 minutes of reading, then word par made easy for English, then you have to attend this class as well. There are a lot of things that you are supposed to be doing. Okay, so Rajat, buckle up, my friend, because this is going to be a very very tough journey if you're going to start now. Okay, and if you want any help, you can join my channel, you can ask me at any point of time कि क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, I will be able to help you. Okay. Hi, Alpesh. I am doing good. I know it is not for me. The silence response of public in is in heinous crimes deems to espouse it. Very very nice, Soumya. क्या sentence बनाया आपने? The silence response of public in heinous crimes deems to espouse it. Very very nice. मतलब आप क्या हो? एन अकम्प्लिस हो जाते हो अगर आप चुप बैठते हो और बस तमाशा देखते हो. तो वेरी नाइस सौम्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस. अगेन दिस लाइन ऑफ रीजनिंग इज प्योरली स्पेक्युलेटिव. वेरी नाइस त्रिरंगा, simple and sweet. No girls involved this time. No behan. Christy, Pak inciting Khalistan group to ask separate country from India. Pakistan is inciting, okay, or incites Khalistani group to ask us for a separate country from India. Very nice, Christy. Good job. The papers ran speculative stories about his mysterious disappearance. Very nice one, yeah. Very nice.
Vaishnavi, you have come after a long time no see. Vaishnavi, what is up? She had a speculative opinion. She had a बोल रहे हो ना आदित्य, तो a बोल रहे हो तो speculative opinion, not opinions, okay? A speculative opinion on global warming and climate change, which ironed me. And the very next day, I had a break. I broke up with her. Okay, there are things that you cannot get past, right? It goes beyond your values. Very nice, Aditya. So the next day, I broke up with her. इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्लियर नहीं है ओके इंस्ट्रूमेंटैलिटी किसी चीज का एजेंसी बनता है ओके किसी चीज को होने के लिए जो एजेंसी चाहिए होती है ओके जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड पावर मेड इजी इज वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ओके इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी इन योर क्लैट प्रिपरेशन और इन बिल्डिंग योर वोकैबुलरी ओके सो इट इज समथिंग दैट ये क्या करते हैं ये आपका मीन्स है ताकि आप कहाँ पहुंच सके एक अकम्प्लिश्ड वोकैबुलरी हो जाए आपके लिए उसके लिए मीन्स क्या है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं ये किताब यूज करते हैं ओके ये किताब इज एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ समथिंग सो इंस्ट्रूमेंटैलिटी ओके मेंटालिटी आ गया तो नाउन फॉर्म हो गया इंस्ट्रूमेंट है ओके इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ओके the government produced much political propaganda and I swear I'll keep it in thank you okay, you're welcome. Some Babaji is spreading propaganda about his chamatkar. Yes, always, Vaishnavi. Good job. I will curb my desire till CLAT. Very nice, Christy, to go to Goa. Yes. Good job. Ma'am, could you suggest things I should focus on as I'm starting my preparation? What should I do first? You should if you're talking about strictly English language, then you should start reading every day. सबसे पहले सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ो 90 मिनट के लिए पढ़ो फिर उसके बाद ये क्लासेस अटेंड करो ये जो अनअकैडमी के जितने भी सीरीज ऑफ क्लासेस आते हैं दैट इज जनरल अवेयरनेस लीगल करंट अफेयर्स एंड देन एडिटोरियल एनालिसिस ये क्लासेस अटेंड करने के बाद आप क्या करो आप फिर से आप क्या करो आप जीके के नोट्स बना लो along with the classes when the classes are happening अपने backlogs clear कर लो और आपको क्या पढ़ना शुरू करना चाहिए न्यूज़पेपर के अलावा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए बहुत ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो भी गलत हो रहे हैं आंसर्स उसके एक्सप्लेनेशन देखो कि क्यों गलत हो रहे हैं so you have to do all that okay and Rajat do buy a plus subscription अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर खरीद लेना बिकॉज क्लासेस से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी नहीं तो आप बस मॉक्स पे मॉक्स देते रहोगे कुछ नहीं घंटा नहीं फर्क पड़ेगा ओके सो मेक श्योर यू डू दैट ओके curbing procrastination seems simple just for one day. Yes, Agnesh, absolutely correct. Very nice. I curb my time to watch YouTube shorts because CLAT is beside me. To watching YouTube shorts because CLAT is beside me. Vaishnavi, beside me, nahi samajh mein aaya. I began to curb my appetite for food and drinks in parallel world. Suranga, oh my God, things changed very quickly. Okay. Clat Nagul, my ex-girlfriend, was concerned that my speculative posts on social media could be used to incite violence and spread propaganda. Very nice, Clat Nagul, very nice. A child is always able to identify होना चाहिए यहाँ पर वैष्णवी her mother in a crowd. A child, a mother is always identifiable to a kid in a crowd. Okay. Instrumentally clear नहीं है largest. Okay. All right. I complete my 15 hours journey on berth of Indian Express train. Very nice, ma'am. Whatever you are guiding him, ये सब हलवा थोड़ी है. जान निकल जाती है ये सारे में. I know Triranga, but this is the only way. What can I tell him? फिर से आना अगले साल नहीं. If you can make sure that you can put so much of effort, then it is something that you should try. But because हलवा तो definitely नहीं, okay? ये सब तो डेली करना पड़ेगा और 1 मिनट का भी सांस नहीं है यू जस्ट हैव टू गेट अप फ्रॉम योर सीट टू ईट फूड एंड टू फिनिश योर डेली चोज ओके बस इतना ही आपके पास टाइम है इधर उधर भी देखने का टाइम नहीं है आपके पास अब ठीक है सो द वर्ड्स दैट वी डिड वर स्पेक्युलेटिव इनसाइट
incitement, propaganda, instrumentally, curb, identifiable, and birth. Let's move on to some of the important announcements. All India CLAT mock test 2024 is a pack of 35 mocks, जिसमें आपको 30 full length mock मिलेंगे CLAT के. And again, you have to give mocks, so make sure that you grab this pack at least. Mocks देना भी बहुत जरूरी है. 30 full length CLAT के mocks और 5 full length AILET के mock tests मिलेंगे. And this is exclusively available on the Unacademy store. तो आपको store पे जाना है, आपको मेरा code लगाना है वैष्णवी 10, जो आपको जिसके वजह से आपको discounted price पे मिलेगा ये 3799 का. And this offer is only valid till July 9th of July. So hurry up. Okay, and this pack of 35 is free for all the Plus and Iconic subscribers. Okay, you can scan this QR code and it will take you to the store. Okay, CLAT के प्रिंटेड मॉक्स जिसमें 10 सेक्शनल मॉक्स, 10 फुल लेंथ मॉक्स जो नए पैटर्न पे बेस्ड होगा, ये डिलीवरी इसकी शुरू हो जाएगी. और ये किसको डिलीवर होगा? सारे आइकॉनिक बैचेस को डिलीवर होगा और 12 मंथ्स एंड अबव प्लस सब्सक्राइबर्स को डिलीवर होगा. The Warriors is a batch for CLAT, AILET, MHCET, SLAT, LSAT 2024, and this batch has started from 29th June. Okay, and you can use my code अगर आप अभी preparation शुरू कर रहे हैं, people who are starting their preparation now and want to clear their concepts. Okay, तो बहुत ही amazing educators है सारे के सारे including me. Okay, so you can join the Warriors batch जिसमें you will be prepared for CLAT 2024. You can use my code Vaishnavi 10 to get flat 5% discount on your upon enrollment. Okay, so Vaishnavi 10, do not forget it is VAISHNAVI 10. देन अगर आपको अगले साल के लिए क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप क्लैट 2025 का प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं. ओके, एंड दिस विल गिव यू एन अपर हैंड डेफिनेटली. ओके, तो again, a lot of fantastic educators along with me. Vaishnavi is also taking session in ACE Legal. Okay, so you can use my code Vaishnavi 10. You get 5% off on this offer. All right, so use it in the store. क्लैट के सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट क्या है? ओके, अगर क्लैट के दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है. तो प्लस इज अ बेसिक प्लान जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, एक्सेस टू ई नोट्स मिलते हैं. ठीक है, आइकॉनिक में ये सब कुछ है जो भी प्लस में है, और उसके अलावा आपको लाइव मेंटरिंग सेशंस मिलते हैं, डिटेल्ड फिजिकल नोट्स मिलते हैं दैट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, एंड प्रिंटेड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं दैट विल ऑल्सो बी delivered at your doorstep. Okay, so that is the difference between plus and iconic. To make sure that you are subscribing to either of the दोनों में से कोई भी आपको जिसकी ज्यादा जरूरत अभी महसूस हो रही है, please make sure that you enroll yourself in that. All right, can we get started? My grandfather's daughter in-laws husband, my grandfather's daughters in-laws husband reserved a berth in Singapore gigantic cruise where me and my bestie enjoyed the night. Why did you go in such a roundabout way of about this, Clat Nagu? Huh? Why did you say your grandfather's daughter? Your grandfather's daughter is your mother. Okay, daughter-in-law. Okay, your grandfather's daughter-in-law. Again, could be your mother. In-law's husband, that is your father. Your father reserved a seat for you and you had to go such an indirect way about it. Tell me about inference question on RC. What do I tell you, Sonali? क्या बताना है आपको इसके बारे में? I don't know, but still it is a very roundabout way to going about it. मेन आइडिया और इन्फ्लुएंस करने में प्रॉब्लम होता है अभी भी. तो अभी भी मतलब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है मतलब अभी भी आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं पहुंची, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद क्वेश्चंस, तो आपको एटलीस्ट पता है ना किन किन की आप मेन आइडिया वाले क्वेश्चंस में अटक रहे हो, इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस में अटक रहे हो. तो इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा ध्यान दो इनके कॉन्सेप्ट पे. इन्फ्लुएंस क्या होता है? समथिंग दैट इज जो आप एक एजुकेटेड गेस होता है. ठीक है, इन्फ्लुएंस क्या होता है? एजुकेटेड गेस होता है. जो आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उससे
क्लूज लेते हो, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हो। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको सुबह उठ के आपको खिड़की से बाहर आप देखते हो तो आपको दिखता है कि जमीन पूरी गीली हुई है, तो आपको समझ में आ जाता है कि रात में बारिश हुई थी। ओके, तो ये आप इन्फर कर रहे हो कि रात में बारिश हुई थी, राइट, बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज एन इन्फरेंस। ओके, so something that is not stated directly in the passage but indirectly implied in the passage. Okay, that is an inference. Okay, let's get started with the editorial. Thwarting Twitter. Okay, so thwarting Twitter is the headline, is the title given. अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन आइडिया. रिमेंबर, डार्क ब्लू से मैं क्या करती हूँ, हमेशा मेन आइडिया कवर करती हूँ. लाइट ब्लू से स्किम करने वाला पार्ट कवर करती हूँ. अगर येलो यूज कर रही हूँ तो दैट इज इंपॉर्टेंट डेट या इंपॉर्टेंट प्रॉपर नाउन जो कवर हो रहा है वो है. इंपॉर्टेंट वर्ड या की वर्ड के लिए मैं येलो यूज करती हूँ. मस्टर्ड यूज करती हूँ कंक्लूजन के लिए. एंड डार्क ग्रीन यूज करती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए. लाइट ग्रीन अगेन फॉर स्किमिंग. ओके, फर्दर extension of that point. These are the color codings that I use. Ruling in favor of blocking should not be the last word on social. तो ruling in favor of blocking should not be the last word on social media law. Okay, तो ये है conclusion. Okay, conclusion क्या बोल रहा है, author क्या बोल रहा है कि ऐसी ruling जो block कर रही है, रूलिंग्स इन फेवर ऑफ ब्लॉकिंग, कोई भी चीज ब्लॉक करने के फेवर में जो रूलिंग है ये लास्ट वर्ड नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया लॉ में. ओके, मतलब ये लास्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए कि ब्लॉक कर दे इसको सीधा. ओके, कोई कुछ रीजन नहीं है, अब कुछ और हमें कोई जरिया नहीं मिल रहा, तरीका नहीं मिल रहा, तो हमें ब्लॉक कर देना चाहिए. ओके, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एडिटोरियल. लेट्स मूव ऑन टू द मेन आइडिया. ओके, no problem, Shreya, but what happened? Okay, it is unfortunate that the petition by Twitter Incorporated, challenging the validity of the spate of blocking orders passed by the union government was rejected by the Karnataka High Court. Okay, so क्या हुआ है, किसके बारे में, यही है मेन आइडिया. ओके, दिस इज गिविंग यू अ हिंट कि पैसेज में किस बारे में डिस्कस होने वाला. ओके, पैसेज में किस बारे में डिस्कस होने वाला है. All right, then moving on to the, किस बारे में डिस्कस होने वाला है कि ट्विटर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट. अब अनफॉर्चुनेट कौन बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है, राइट. सो ऑथर हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू. ओके, दिस स्टेट्स दैट कि ऑथर ने अपना व्यू इसमें एक्सप्रेस किया. ओके, तो ऑथर क्या बोल रहे, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द पेटिशन बाय ट्विटर, पेटिशन जो ट्विटर ने किया था, जारी किया था, किस चीज को चैलेंज करते हुए, ये जो स्पेट ऑफ ब्लॉकिंग, ये जो बार बार चीजों को ब्लॉक करने के लिए बोला जा रहा था, ये किसने पास किया था, यूनियन गवर्नमेंट में, वो जो रिजेक्ट हुआ था बाय कर्नाटका हाई कोर्ट. ओके, तो ये अनफॉर्चुनेट है. ओके, वाइल, अब इसके बारे में बता रहा है कि क्यों अनफॉर्चुनेट है. अब फर्दर ऑथर बताएगा, वाइल सक्सेस इन लिटिगेशन इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट्स पावर टू रिस्ट्रिक्ट स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन ग्राउंड्स permitted in Article 19(2) of the Constitution was always expected to be difficult, it is disconcerting that the court refused to countenance all argument based on the absence of notice to users and the apparent lack of proportionality involved in large-scale suspension of accounts and posts that contain political content, especially dissenting views against the government's farm laws and farmers' protest they sparked. Okay, so देखो, सक्सेस लिटिगेशन इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट्स पावर टू रिस्ट्रिक्ट स्पीच एंड, अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे. ठीक है, क्या बोल रहा है यहां से यहां पर, लेट्स जस्ट ब्रेक इट. ओके, while success in litigation involving the government's power to restrict speech, ये जो गवर्नमेंट का जो पावर है
ओके कि स्पीच और एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे किस ग्राउंड पे, आर्टिकल 19 के ग्राउंड पे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमेशा, ये जो इसमें जो सक्सेस है ये हमेशा एक्सपेक्ट किया गया था कि ये डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इसका सक्सेस हमेशा सोचा गया था कि इसका सक्सेस डिफिकल्ट होगा। इसका जो लिटिगेशन पावर है, ओके, गवर्नमेंट का, कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे स्पीच और एक्सप्रेशन किस ग्राउंड पे, आर्टिकल 19 के ग्राउंड पे, 19(2) के ग्राउंड पे। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिसकंसर्टिंग, ये बहुत अनकंफर्टेबल है कि कोर्ट कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया। किस चीज को रिफ्यूज कर दिया? जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ नोटिस टू यूजर्स, ओके, जितने भी ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स थे जो जिसमें कोई नोटिस नहीं किया था यूजर्स को एंड अपेरेंट लैक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन्वॉल्व्ड इन लार्ज स्केल सस्पेंशन ऑफ अकाउंट्स that contain political content, especially dissenting view against the government farm laws and protests they sparked, okay। तो उन्होंने क्या किया? ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिफ्यूज कर दिया है किसी भी चीज को काउंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। जितने भी आर्ग्यूमेंट है, ऐसे आर्ग्यूमेंट जिसमें कोई लीगल नोटिस नहीं गया है, कोई अपेरेंट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, तो उसको क्या कर दिया गया है, दे हैव स्पार्क्ड, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लार्ज स्केल सस्पेंशन ऑफ अकाउंट्स और पोस्ट दैट कंटेन। तो स्पेशली उन्होंने क्या किया है, ऐसे पोस्ट को टारगेट किया है कि ये सारे पोस्ट हटा देने चाहिए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोली जा रही है, स्पेशली गवर्नमेंट के फार्म लॉज के अगेंस्ट बोली जा रही है और फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बोली जा रही है। ये अभी बहुत ज्यादा स्पार्क हो गया, ओके। There are some exceptions, okay। Now this is talking about कि क्या expectations है। There are some expectations that judicial review will temper the authority's zeal to go in for account level blocking rather than ordering the removal of specific tweets or links or URLs that is deemed injurious to public order or national security। तो अब क्या बोल रहा है कि कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है कि कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू जब होगा, ओके। जब जुडिशियल रिव्यू होगा, इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग एक ऐसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब जुडिशियल रिव्यू होगा तो ये जो इनकी बहुत एनर्जी है कि सारे ऐसे अकाउंट को, पूरे अकाउंट को ही ब्लॉक कर देंगे हम, जो हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, स्पेशली इन फार्मर्स लॉ। ये जो उनका जो अप्रोच है, अभी भी उम्मीद है कि जुडिशियल इसको इनकी 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 जितना एक्साइटमेंट नहीं शो करेगा इन दैट, इंस्टेड ऑफ दैट इट विल टॉक अबाउट कि कैसे यूआरएल या लिंक रिमूव करना, ना कि पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देना, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड कि ऐसा नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल वर्च्यूज, ओके। अब ऑथर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। अब देखो ऑथर खुद से बोल रहा है कि व्हाट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, ओके। तो दैट मीन्स द ऑथर इज डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड, ओके। व्हाट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग is that the court both ruled that Twitter cannot espouse the cause of its users who have voiced no grievance and discouraged an intervener from among those who suffered account level suspension, okay। तो अब क्या बोल रहा है कि ये बहुत डिस्कम्फर्टिंग है कि कोर्ट ने, कोर्ट is that both is the court both ruled that Twitter cannot, okay, ट्विटर इस चीज से ये चीज नहीं कर सकता है कि द कॉज ऑफ इट्स यूजर्स हु हैव वॉइस नो ग्रीवेंस, ओके। ट्विटर उन लोगों के लिए बात नहीं कर सकता है जिन्होंने कोई भी अपने साइड से ग्रीवेंस नहीं दिखाया, उन लोगों के, या ये जो इंटरवीन कर रहे हैं, ये जो यूनियन गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, उसमें जो लोगों ने कोई अड़चन नहीं दिखाई है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं दिखाई है, तो ट्विटर कैन नॉट डू दैट। ट्विटर कैन नॉट से कि उन लोगों को परेशानी हो रही है, ओके, अमंग दोज हु सफर्ड अकाउंट लेवल सस्पेंशन, ठीक है। इन लोग की तरफ ट्विटर अपने साइड से नहीं बात कर सकती, ओके। इट रूल्ड दैट अ फॉरेन एंटिटी सच एज ट्विटर could not provoke the constitution guarantee of free speech and expression on behalf of its users। तो ट्विटर ये गारंटी नहीं कर सकते एक फॉरेन कंट्री की ये जो अकाउंट, ये जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी एक हमारे देश के लोगों की फ्री स्पीच या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं प्रोवाइड कर सकती कि हम देंगे आपको फ्री स्पीच। ट्विटर जो कि बाहर की अकाउंट है, ओके, मतलब बाहर का कंपनी है, ओके। सो ये नहीं कर सकती, ऐसा बोल रहे हैं, ओके।
ऐसा रूलिंग आया है। In the ultimate rebuff to the platform, the court imposed cost of 50 lakhs for indulging in much delayed speculative litigation despite not complying with the blocking orders for a long period and then doing so only under protest. Okay, तो ट्विटर उल्टा कोर्ट ने क्या किया है, इन दी अल्टीमेट रीबफ, ओके, ये इस प्लेटफॉर्म की तरफ अल्टीमेट रूडनेस कैसे दिखाई है कोर्ट ने, कि उसने 50 लाख का उस पे फाइन लगा दिया है ट्विटर पे, कि आप जो कर रहे हैं वो स्पेक्यूलेटिव लिटिगेशन है, ठीक है, आप मच डिलेड इंक्लूडिंग इंडल्जिंग इन, तो ये क्या कर रही है, ये अपने आप को ट्विटर इंडल्ज कर रही है किस चीज में, स्पेक्यूलेटिव लिटिगेशन में, कि ऐसा हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है लोगों के साथ, इसमें वो स्पेक्यूलेटिव लिटिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्पाइट नॉट कंप्लाइंग विथ ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। तो पहले उन्होंने ब्लॉकिंग ऑर्डर्स पे कंप्लाई नहीं किया था, जब तक फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत देर तक कंप्लाई नहीं किया था, एंड देन डूइंग सो ओनली अंडर प्रोटेस्ट। ओके, तो फाइनली उन्होंने किस चीज पे किया, प्रोटेस्ट के अंडर में ये ब्लॉकिंग ऑर्डर उन्होंने फुलफिल किया, तो इसीलिए उनपे 50 लाख का फाइन इम्पोज कर दिया। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, there is little doubt that social media content can degenerate into incitement, hate speech, and hostile propaganda against the state of its instrumentalities. Okay, so बहुत कम डाउट है कि सोशल मीडिया ऐसा कुछ कर सकती है। ओके, सोशल मीडिया हेट स्पीच बढ़ा सकती है या हॉस्टाइल प्रोपेगेंडास बढ़ा सकती है अगेंस्ट अ स्टेट, ओके, और इट्स इंस्ट्रूमेंटैलिटीज, एक स्टेट या उसके स्टेट के जितने भी कायदे कानून है उसके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा एक कोई सोशल मीडिया नहीं इंसाइट कर सकती। ओके, दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। Laws exist in most countries to order intermediaries such as social media platform and internet services providers to remove any offending content, but it is a common principle that established democracy should frame policies and regulations rooted in fairness and natural justice and not impose undue curbs on freedom of speech and expression. Okay, so अब क्या बोल रही है कि सारे कंट्रीज के पास ऐसे लॉज होते हैं या इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया के कंटेंट है वो उनकी डेमोक्रेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, या कोई पॉलिसी के साथ या शुड फ्रेम पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, और ये सारी कंट्रीज को पॉलिसीज और रेगुलेशंस इस चीज पे फ्रेम करनी चाहिए कि नेचुरल जस्टिस में जो इम्बाइब करता है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस को जो बढ़ावा देता है, और ऐसे चीजों को हटाना चाहिए जो क्या करता है, कर्ब्स इंपोज करता है, बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में बाधा डालता है। ओके, ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए। Okay, now the author is talking about Section 69A of the IT Act, which sets out the power to issue blocking orders, was upheld by the court in Shreya Singhal 2015, mainly on the grounds that it came with adequate procedural safeguards. Okay, तो इसको अपहेल्ड क्यों किया था, ये वाला जो अब ऑथर एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, 69A आईटी एक्ट के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, श्रेया सिंघल का जो केस था और ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, ये वाला जो केस था, इसमें कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था। ओके, क्यों किया था, क्योंकि एडिक्वेट प्रोसीडियल सेफगार्ड्स थे उसके पास। ओके, अब ट्विटर के केस में क्या है, आर्ग्यूड दैट लैक ऑफ नोटिस टू द ओरिजिनेटर्स ऑफ द कंटेंट एंड द अकाउंट यूजर्स वाज अ ब्रीच। ओके, ट्विटर क्या कह रहा है कि आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा आपने ब्लॉक कर दिया, तो ये एक ब्रीच है। ओके, दिस इज व्हाट द ऑथर इज कॉलिंग अ ब्रीच। ओके, ऑथर क्या बोल रहा है, ये एक ब्रीच है ऑफ दैट वर्डिक्ट, ये उस वर्डिक्ट का ब्रीच है। ओके, एक वर्डिक्ट जो सुना है उस वर्डिक्ट का ये ब्रीच है, मतलब ये वर्डिक्ट उसके अगेंस्ट जा रहा है। ओके, द कोर्ट हैज ruled that issuing notice to users was not mandatory, especially when they may not be identifiable. Okay, तो कोर्ट क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई इशू मैंडेटरी नहीं था हमारे साइड से, और तब स्पेशली तब जब आधे से ज्यादा यूजर्स आइडेंटिफाइबल ही नहीं है, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन ने किसने पोस्ट किया है, तो कैसे हम उसको नोटिस जारी करें। ओके, conclusions such as this. Okay, so this definitely, देखो यहाँ पर the author itself is saying conclusions such as this and the wide berth given to authorities to opt for account level blocking may require reconsideration. तो author क्या बोल रहा है कि ये जो ऐसी conclusions पे जो पहुंचती है, ओके, कानून जब ऐसे
डिसीजंस पे पहुंचती है। तो ये दिखाता है कि कितना उनको बड़ा जो जो अथॉरिटीज हैं उनको कितना ज्यादा पावर मिला है, उनको कितना ज्यादा बर्थ मिला है, उनको कितनी जगह मिली है कि वो अकाउंट लेवल ब्लॉकिंग भी कर देते हैं। इस चीज को हमें रिकंसिडर करना चाहिए। अ डेफिनेट वर्डिक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट may not be needed to clarify both the rights and obligations of large media companies in relation to users generated content. Okay, तो एक डेफिनेटिव वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं चाहिए, होना चाहिए किस चीज के लिए? नीडेड टू क्लैरिफाई बोथ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लार्ज मीडिया कंपनी इन रिलेशन टू यूजर्स जनरेटेड कंटेंट। ये कोई जरूरी चीज नहीं है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेना कि किस अकाउंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी मीडिया कंपनीज को इस चीज में ओके जनरेट इन्वॉल्व करना इज नॉट समथिंग दैट इज आइडियल। ओके, दैट इज व्हाट द इंटायर एडिटोरियल इज। अब जल्दी से क्विकली टेल मी व्हाट इज द एंड dismisses represents people. Ma'am, please repeat the third line, please. Third line. Ma'am, can you explain it in English? भाई अलग ही दिक्कत है लोगों को। इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ तो बोलते हो हिंदी में एक्सप्लेन करो, हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बोल रहे हो इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। थर्ड लाइन, थर्ड लाइन इज अ ह्यूज लाइन। आप इसको ब्रेक कर करके एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी रिपीटिंग दिस। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको समझा दूंगी। सो द टोन इज disappointing. Okay, or critical, biased, it can be any of this. Okay, all right, so that is it for today. Thank you so much everyone, and I will see you in the next class.